स्टार्ट करें। हाँ, CORHIG company. Estimate the value of CORHIG company using price upon earnings ratio method and discuss the usefulness of the variables that you have used. P ratio से valuation find out करनी है. CORHIG company is a company that is listed on a major stock exchange. The company has struggled to maintain profitability in the last 2 years due to poor economic condition in its home country, and as a consequence, it has declined. It has decided not to pay dividend in the current year. However, there are now clear signs of economic recovery, and CORHIG is optimistic that the payment of dividends can be resumed in the future. Forecast financial information relating to the company is as follows. The company is optimistic that the earnings and dividend will increase after year 3 at a constant rate. फिर ये बीटा इक्विटी बीटा दिया हुआ है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 75%, 25% डेट. देखो पी रेशियो से वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है, राइट? आई थिंक इतने इंफॉर्मेशन में हम लोग वो कर सकते हैं. अगर खाली अपने को पी रेशियो चाहिए. हाँ, पी रेशियो ऑफ ऑल द सिमिलर लिस्टेड कंपनीज इज 5 times. बाकी सारी इंफॉर्मेशन की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है फिलहाल के लिए. 26. Determine the valuation of the company. P ratio formula. P ratio is equal to yes, value is upon EPS. So therefore, P ratio P is equal to the average P ratio of similar companies. Yes, या फिर reduction is equal to 5 into फर्स्ट ईयर का ही ले लेंगे 3000. तो हो गई 15,000 की वैल्यूएशन. तो estimate the value of P ratio and discuss the usefulness of the variables that you have used. तो एक तो अपन ने एवरेज पी रेशियो लिया है ऑफ सिमिलर कंपनीज. सो इस एवरेज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्मॉल कंपनीज, लार्ज कंपनीज, कंपनीज दैट डील इन डोमेस्टिक मार्केट, इन फॉरेन मार्केट, कंपनीज दैट आर हाईली गियर्ड एंड नॉट एंड लेस गियर्ड वगैरह. लास्ट में क्या बोल सकते हैं? Okay, we should only use the P ratio of the companies which, मतलब two companies can never be the same, but assuming that the companies operate in similar working environments, we use the average P ratio of the similar companies. परफेक्ट. पढ़ लेते हैं जरा सॉल्यूशन का नंबर. तो इस सॉल्यूशन का पेज नंबर है 580. वैल्यूएशन आ गई 15 मिलियन की. Using the current average price upon earnings ratio of similar listed companies,
as the basis for valuation rests on two questionable assumptions. Firstly, the terms of similarity, the valuation assumes similar business operations, similar capital structure, similar earnings growth prospects, and so on. In reality, no two companies are identical. Secondly, in terms of using the average price upon earnings ratio, this may derive from companies that are large and small, successful and failing, low geared and high geared, domestic and international in terms of markets served. The calculated company value therefore has large degree of uncertainty attached to it. Nice. The earnings figure used in the valuation does not include expected earnings growth. If average forecast earnings over the next 3 years are used, then 3.63 million, the P ratio value increases by 21% to 18.5%. Although earnings growth beyond the third year is still ignored, 18.5 million is likely to be a better estimate of the value of the company than 15 million because it recognizes that earnings are expected to increase by almost 50% in the next years. ये कंसिडर करने की जरूरत है तेरे को लगता है? देख, क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है हाँ, एवरेज, तो इफ वी फाइंड 15 million एंड वी गिव द एक्सप्लेनेशन, तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ. ओके. Yeah, because it is for 4 marks, so 2 marks is for calculation and 2 marks will be for the explanation कि why we are using the average P ratio. राइट. आगे बढ़ते हैं. Calculate the cost of equity of CORHIG company and use these values. And using this value, calculate the value of the company using dividend valuation model. ये तो तो ये यहाँ से थोड़ा बनता है ये क्वेश्चन. यही तो ठीक है, फिर भी निकाल लेंगे. current cost of equity find them. प्राइसिंग मॉडल. तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया. ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर एफ प्लस ब्रैकेट ओपन बीटा इक्विटी इंटू 12% की. नाउ सबसे पहली बात तो वो लोग ईयर 1 में डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं, तो हमें डिविडेंड वैल्यूएशन लगाएं तो हम डिविडेंड 2 और डिविडेंड 3 का जो है वो डायरेक्टली ले लेंगे. Sure, we cannot use the dividend valuation model directly, so we need to consider the dividend being paid for the year 2 and year 3. Uh, uh, Year 3. By bringing them to the present value, by bringing them to their
प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को हम डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। Dividends hundred 1000 discounting 12% for year 2, परसेंट हम कंसिडर करेंगे 0.893, नहीं ईयर 2 के लिए ना, ईयर 2 के लिए 0.797 एंड 0.712, तो इन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो आती है इतनी, सम का इतना आता है, एंड देन लास्ट में आता है आफ्टर ईयर 3, तो पछड़ी तक है ना। The company is optimistic that the earnings and dividends will increase after year 3 at a constant annual rate of 3% per year. Perfect. ये नीचे क्या दिया है? During the course of the last 2 years, the company acted to reduce the gearing and was able to redeem a large amount of debt. Since there are signs of economic recovery, CORHIG company plans to raise further debt by modernizing. ठीक है, 60% 40% ठीक है, हाँ ठीक है, तो रेलेवेंट नहीं है। आफ्टर ईयर 3, और आफ्टर ईयर 3 we will need to use the dividend valuation model. So KE is equal to DO bracket open 1 plus G upon PO plus G, PO G, PO तो निकालना है, और K is 12%, G is 3% बोला ना हमने, constantly growing at the rate of 3%. DO हमने पे कितना किया था यहाँ पे, 1000 पे किया था, तो KE is equal to into bracket open 1 plus 3% and 9%. So PO, sorry, this is PO plus now the valuation of the company using dividend valuation model will be bracket सबसे पहले this plus this bracket close into 1000, जो आती है कुछ 1,25,54,000 समथिंग। ओ सॉरी, इस चीज को अपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना था। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू will be 0.712, which is डिस्काउंटिंग हो गई ये चीज की, जो चीज की प्रेजेंट वैल्यू फिर आ जाती है 9258944, विच इज 9.3 मिलियन, जो इनको भी यहाँ पर मिली है।
145 मिलता है हमको वहां पे, 45 मिलता है, विच इज ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, फाइन। तुमको आया? एक मिनट। हाँ हाँ। 89 509.611 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 9.3 मिलियंस आता है एक्चुअली ये एक मिनट एक चीज। मिनट, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, एक मिनट एक मिनट, इसको भी तो करना पड़ेगा ना डिस्काउंट। पॉइंट 797। डेट। ठीक है, ये करेक्ट है मेरा। नेक्स्ट में वो लोगों ने हमसे पूछा है कैलकुलेट द WACC, current weighted average cost of capital of CORHIG company and the weighted average after tax cost of capital है। अच्छा, करंट और आफ्टर मतलब ये गियरिंग चेंज हो जाने के बाद का होगा सर है। Following the new debt issue and comment on the difference between the two values. So CORHIG company currently has before tax cost rate of 5%. हाँ, बिफोर टैक्स रेट ऑफ 5%, इस चीज को शायद लेके आएंगे बस इस पे करंट प्रेजेंट टर्म्स पे, यानी कि टैक्स माइनस करेंगे इस चीज पे। देन before the course of last 2 years company has acted to reduce gearing and able to redeem large amount of debt. Since there are now clear signs of economic recovery, Core company plans to reduce debt in order to modernize some of its non-current assets and to support the expected growth in earnings. This additional debt would mean that the Core company would reduce to 40%. The before tax also debt would increase to 6%. Okay. तो सबसे पहले करंट वैल्यू निकालते हैं। 92540555। सेम मतलब 9258,944 आया मेरे को, बट 9.3 मिलियंस इज द आंसर, तो चल ही जाता है अगर सेम ही है। यूजिंग करंट वैक, करंट वैक के हिसाब से इन द प्रीवियस क्वेश्चन we found the AE to be 12%. Now we need to find the AD. तो अभी इस क्वेश्चन में ना, तो पहले पढ़ ले फिर मैं पूछता हूँ एक्चुअली। There are new clear signs of economic recovery, raise further debt in order to modernize some of the non-current asset. Additional debt would mean that the capital structure will go by 60-40. Hmm. अभी
इस केस में अपने को आईआरआर लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें पोस्ट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, तो उसमें से खाली अपन टैक्स माइनस कर लेंगे ना, राइट। तो आईआरआर की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट वुड बी 4 into 1 minus 0.2 is 3.2, टैक्स रेट 20% है। हाँ, मार्केट वैल्यू बेसिस पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट्स ओके। Tax cost of that was, oh sorry, before tax cost of that was 5, होता है 4। Before tax cost of that control C, tax rate for that is 5, market value, the rate, cost of capital, post tax cost, post cost of capital value, on my WACC in this case would be 10%. WACC का फॉर्मूला लगा के दिस वुड बी माय 10%। However, अभी जब मैं न्यू WACC निकालूंगा अंडर द न्यू इशू, WACC following the debt issue, following the debt issue, following the debt issue, तो अगेन हम यहाँ पर फिर से एक बार कैपम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। In order to find the KE, we need to use the CAPM. This KE is equal to K is equal to RF plus beta equity RF minus sorry RF minus RF क्या करना, तो मुझे मिलता है RF बीटा इक्विटी, देन RF में सारा मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, RM माइनस RF बीटा इक्विटी is 2, RF is रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बाकी सब तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज भी नहीं होगा, रिस्क प्रीमियम वुड बी 5%, so RF would be 4%,
Risk premium would be 5%. Risk premium is now risk premium, premium would be 5%. Now the KE would be plus bracket open beta equity into, तो मुझे मिलेगा 14% का, तो ये मुझे आ गया 14% का. अब बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 6 पे, ये टैक्स रेट तो 20 है, तो ये मेरा चेंज हो गया हो जाएगा यहाँ पे 4.8%, तो यहाँ पे आ गया 4.8%. फिर मार्केट वैल्यू, तो अभी हाँ ये जो चेंज होंगे वो होंगे फाइनेंस बाय 60% एंड 40%. 40, तो यहाँ पे आ गए 10.32% टाइप. नेगेटिव में क्यों आ रही है? 0.32%, एक बार चेक कर लेते हैं. ये आ गया 10% करंट WACC, ये 10.32% revised WACC. After the WACC has been increased from 10.32%, the change is a result of an increase in the cost of equity and after-tax cost of debt, coupled with the change in gearing. Although the cost of equity has increased, the effect of increase has been reduced because the proportion of equity finance has fallen from 75% to 60%, and the long-term capital employed. Although after-tax cost of debt has increased, the cost of debt is less than the cost of equity, and the proportion of cheaper debt finance has increased from 25% to 40% of the long-term capital employed. ठीक है, बेसिक सही लग रहा है. इंक्रीज हुआ क्योंकि डेट बढ़ गया है. ओके, हाँ, इक्विटी कम हो गया है. मेक सेंस. तेरा हो गया? हाँ हो गया. ओके, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं. Discuss how the shareholders of CORHIG can assess the extent to which they face the business risk. Explain the nature of the risk being assessed. Business risk arises due to nature of the company's business operations, which determines the business sector into which it is classified and the way in which a company conducts its business operations. It is the variability in the shareholder returns that arises as a result of business operations. Business risk can therefore be related to the way in which profit before interest and tax, that is PBIT or operating profit, changes as revenue changes. This can be assessed from the shareholder perspective by calculating operational gearing, which essentially looks at the relative proportions of fixed operating cost into variable operating cost. Another measure of operational gearing can be used is 100 into contribution upon PBIT, although other measures are also used. मेरा ये बीच के पैराग्राफ के टाइम पे ध्यान ही नहीं था. Business risk Therefore be related to the way in which profit before interest and tax changes as revenue changes. This can be assessed from shareholder perspective by calculating operational gearing. ठीक है, मतलब ऑपरेशनल गियरिंग को बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं, ऐसा शायद ये बोलना चाहते हैं. हाँ हाँ, because operational gearing is अपना EBIT, profit, revenue, fixed cost, variable cost. हाँ ठीक है.